Yeah, hi everyone. So today I'm with Shubham. Shubham, just give a small intro of yourself to the audience. ठीक है, फिर हम interview start करेंगे. Hello everyone. So I'm Shubham Agarwal. I am a chartered accountant by profession and currently I'm working with ITC Limited as finance manager in internal audit division. I currently have I am Ahmedabad, I am Bangalore, as well as I am Kozhikode Falls. My CAT percentile is 98.66. Okay, that's nice, great. So let's start the interview. Okay. Yes. So hi Shubham. Uh, Tell me something about your schooling. How was it? So sir, I did my schooling from Delhi from CBSE board. In 10th, I was able to score 9.6 CGPA and in 12th, I was able to score a 93.8 percentage. What additional things you did in schooling, which you think that had added value in your professional career? During my schooling times, mostly what I did was participate in a lot of Olympiads. Okay. So from class third to class ninth, I got like six gold medals in International Mathematics Olympiad, one gold medal in International Science Olympiad. Okay. That means you're good at mathematics. Yes, sir, the basic mathematics. Okay, that means like you have studied high in mathematics, prepared for JEE and all. Uh, I wasn't much interested in the other subjects like physics and chemistry. I was more inclined towards the finance side because my father is also a chartered accountant, so I was more inclined towards the finance side. That's why I decided to pursue commerce in my 12th. Okay. So you're already doing CA, your father is CA, you're a finance manager. Why you want to go for MBA then? So my long-term objective is to basically go for a startup. So what I understand is to basically start my entrepreneurship journey, I need to get understanding of subjects which are other than finance, like operations, product development, marketing, supply chain. And for understanding of these subjects, I need to do an MBA so I can basically learn all the aspects of startup and be more confident when I'm trying to start my entrepreneurial journey. Second thing, why I need an MBA is in chartered accountancy course, we don't get much opportunities of creating a big network. And I believe for being a successful entrepreneur, we need to have a good network in the market. So, in my opinion, and MBA generally provides a great alumni network to student. So, I think that networking aspect is one of the most important aspect for me, which made me choose to go for an MBA. So what is a particular aim in which type of company you want to open as a startup? I have currently not decided which kind of product will I be doing my startup in because I think that the market is very dynamic. So when I become an MBA, I will be able to do a better market research, identify the gaps in the market, and try to fill that gap with the product or service, whichever industry I would like to go in. So I have not decided currently. Currently, seeing the today's market trend, where do you feel the gap is, and which company in which sector you want to open a company? So I think like currently the trend is shifting more towards the technology side. So, in my opinion, some kind of financial service application could be there to fill the gap. I'm not exactly sure because I have not done the market research to identify any gaps, but I think that kind of things are actually gaining much more popularity and much more market demand. And also the financial inclusion. Currently, we have also tying up with Singapore Pay now. So I think that sector is actually going to get a lot more boom in the coming years. Do you feel that there was a gap in this market? Like there are a lot of companies opening for groceries market like Swiggy, Swiggy's Instamart, then Zomato's Blinkit, then Zepto. So there's there's a wave of the companies here in this grocery field. So what do you think about this? Is this a bubble or this will like grow in the further part of will grow further in our country, India, in tier two and tier three cities also? Right now, they're like very much in tier one cities doing very well. Zomato's Blinkit or Blinkit acquired Zomato or Swiggy Instamart, okay, or Zepto.
So what do you think it's the future of these companies here? So the first thing is like this fast delivery apps, which basically delivers in 30 minutes or 60 minutes. I Hmm. think it is basically to create the customer behavior, like change the customer behavior. Because before the customer behavior was basically to go to a retail market and buy things. But now what they want to do is shift the customer behavior from going to the supermarket to basically just opening the app and uh, ordering whatever you want. So currently they are facing a lot of losses, but in my opinion they have been mostly successful in changing the customer behavior. And once they are able to get a good economics in the tier 1 cities, I'm pretty sure they will move into tier 2 and tier 3 cities as well. And I think the growth in future is looking very promising for these companies. So why do you what do you think? Why do they need to open such kind of? Why Zomato was already a food delivery company, Swiggy was a food delivery company. Why it is open to? Why do they need to again open a grocery part of this grocery part in these companies? So one of the thing was Zomato, Swiggy had very low margins when they were operating in the normal restaurant business, because on one hand the restaurant does not want to pay much fees to the uh, apps. Second thing, the customer also requires some kind of discounts, and then you also have to pay your delivery partner, which is basically the delivery agent. So the gross margins in these kind of businesses are very low, and they were mainly operating on losses. But by shifting towards the grocery side, they are able to handle warehouses, small warehouses in every places, and try to get like higher margin businesses. So in future they will be able to basically make themselves profitable. Okay, so do you follow news? Yes, sir. Right, what do you know currently hot in the market? So currently, one of the things hot in market is obviously Russia-Ukraine war. Then there's Adani That's Hindenburg. What? What, sir? old. That is like older news now. But it's always in the news because like something is always going in the You're Russia-Ukraine. aware that Google has launched Bard to compete with ChatGPT. Yeah. So one of the thing was Google launched Bard, and the video they launched for it had one flaw in the whole video, because of which the Google share actually dropped, and they are calling that the Bard launch is kind of a failure for the Google. What was the problem? Uh, I don't exactly remember. In one question, they had a factual error. So it was something related to space, which the fact was incorrect. With Bard coming into the market, what are the challenges that ChatGPT will be facing? So currently, ChatGPT is only an open AI. It's not really working for profits. Uh, what I have read is that Microsoft is planning to invest $10 billion in OpenAI and integrate the ChatGPT with Bing. So once it is integrated with Bing, there will be a bit more competition for the Google, due to which the Google is trying to launch the Bard. So then it would be more like which one is able to optimize the search engine much better with that, and which one will be able to give more personalized answers. Because the main feature it is the natural language processing part, the NLP part of the Chat GPT, which is gaining more popularity. So whichever one is able to give more personalized, more professional answers will be coming out on top. So, do you know about Baidu? Yeah, it's an ed tech app. Which country? Is which country's company? It's India's company. No, no, Baidu, not it's Baidu. Baidu. No, I'm not aware of it. Okay, so Baidu is a company in China and they want to compete with ChatGPT. Okay, so they are also launching their own OpenAI platform like OpenAI. Okay, fine. Okay, so tell me about something about our India, like how Indian government is planning to develop their financial part in next 2 to 3 years. What are their major planning? What are their major how much budget they have allocated and how they are planning to move their country towards a 5 trillion economy. So one of the things they are doing is they have increased their capital investment by 33% to 10 lakh crores.
So the thing they are trying to do is create a better infrastructure in the country. So more and more companies will try to invest. So that will bring in more FDI. That will promote Make in India. So they want Maybe to three or create four major FDA projects recently happened. one of them was Apple setting up a manufacturing hub in the India. I'm not sure about. Uh, Okay, please continue. Yeah, so that is one part. They are trying to increase the infrastructure. Second is they have launched a scheme in I think last budget, the PM Gati Shakti Yojana, which basically connects multiple cities by taking help of multiple ministries. So that is another kind of infrastructure they are trying to develop between the states. Third would be the PM Kaushal Vikas Yojana, which basically is a skill development course. Now they are launching a 4.0 version of it. So by that they are including the courses on AI, robotics, machine learning. So India wants to basically go more into the digital sector as well. Another thing would be they are selling their UPI systems to the other countries. So that will also bring in uh, more money to the country, basically improving the fiscal deficit of the country. Another thing they are doing is they are focusing much more on the financial inclusion part. So the PM Jan Dhan Yojana have been very successful in the past, and they are continuing with that PM Jan Dhan Yojana as well. So that would be another part of it. Uh, Tell me some of the major projects going around Delhi. yeah, so one of them is the ring road is being developed in the Delhi. Another is that they are trying to create roads in such a way that reduces the accidents of the I'm forgetting the name of the project exactly, but it was some safer interactions project or something, which is basically to reduce the traffic, to reduce the uh, to make more safe spots during the intersections of the roads. Okay. Tell some of the current news from the northeast part of India. I'm not exactly sure. Okay. Tell something about the about how Kerala is trying to come up in the recent time. Some of the major projects Kerala is doing, and Kerala has been very much in news these days due to a lot of projects they are doing and supporting Indian government schemes. So what are they? I'm not sure. Okay. Now, what will you do if MBA is completely scrapped? Then how will you reach your long-term goal? If if MBA is actually scrapped, then I would find alternative courses basically which will teach me more about the market research, more about the operation part, more about the supply chain part, and I will try to research more about them on my own and through these courses because I'm pretty sure there are a lot of edtech companies which are providing courses for this, and will try to do my own research to supplement this and increase my knowledge base and then go for the startup journey. Okay, okay, Shubham, wish you all the best. Thank you, sir. ठीक है शुभम, देखो इंटरव्यू अच्छा ही था। ठीक है, कुछ पॉइंट पे ना यहाँ पे ऑफलाइन इंटरव्यूज, जैसे तुम्हारा कल आया मैं अहमदाबाद का ऑफलाइन इंटरव्यू है, तो तुमको मेजरली यहाँ पे आई कांटेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। लॉट ऑफ टाइम तुम्हारा आई कांटेक्ट बहुत तुम इधर इधर देके सोच रहे हो, तो यू नीड टू कॉन्टिन्यूसली लुक इन द कैमरा। ठीक है, तो जो ऑफलाइन इंटरव्यू है ना, तो ऑफलाइन इंटरव्यू में ये होता है कि अब तुमको जो तीन पैनलिस्ट होंगे वहां पे, नॉर्मली 2 या 3 Yeah. पैनलिस्ट होंगे। ठीक है, तो आपको उन दोनों के आईज में देख के बात करना पड़ेगा, इतना आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है कि आपको अगल बगल के वॉल का कलर ही पता ना चले कि क्या है। जस्ट मेंटेन थ्रू आउट दैट आई कांटेक्ट। ओके, say good evening, then talk about saying sometime talk in this person eyes, sometime talk by saying in this person eyes, in this person eyes। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपको आई देना, एक पे भी नहीं होना चाहिए। नो, ठीक है,
एक बार भी नहीं. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट क्रिएट्स अ गुड कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन. ओके. सेकंड थिंग है कि जैसे मैंने बोला कि सपोज आई आस्क्ड यू द फर्स्ट क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट लाइक समथिंग इन स्कूल. ओके. तो आपने अपने स्कूल के बारे में जस्ट बताया कि किस स्कूल में पढ़ते हो, 10 12 का मार्क्स, तो देखो वो तो ऑलरेडी आपके सी में लिखा हुआ है ना. तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ. तो जब मैं बोला कि अपने स्कूल के बारे में बताओ, हाउ वाज इट, राइट, टेल अबाउट इट, व्हाट लर्निंग्स दैट केम फ्रॉम द स्कूल. ओके, वहां से क्या लर्निंग आई. तो मैं मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ही बोलना चाहिए कि स्कूल में क्या लर्निंग्स आई, क्या सीखा है स्कूल में. ऑल दैट स्टफ्स लाइक ओलंपियाड एंड ऑल, जो तुमने बोला, ठीक है, उसको तुमको पहले बोलना चाहिए था. ओके. और तुमने स्कूल में छोटी मोटी जो स्मॉल 3 4 चीजें होती है, ठीक है, अबाउट ऑल दोज स्टफ्स लाइक फ्रेंडशिप्स एंड नॉर्मल, तो नॉर्मल बात करना चाहिए. जस्ट टू इट इज अ क्वेश्चन वेयर लाइक यू कैन जस्ट ब्रेक द आइस. ओके. तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि स्कूल हाउ वाज इट. तो बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द पार्ट स्कूल का कुछ अचीवमेंट्स, कुछ स्कूल का अपने फ्रेंड्स से तुमने क्या लर्निंग ली, ठीक है, ऑल योर फ्रेंड्स लाइक, तो ऐसे कुछ करके ना थोड़ा आंसर देना चाहिए था. ओके. So that like just normal with a smile on the face. Okay. So talking about the school, have like a constant smile on your face, right? कि हाँ अच्छा था स्कूल का टाइम्स. ओके. इस तरीके का होता है. then other thing is that तुम्हें दिल्ली के बारे में प्रोजेक्ट्स बिल्कुल आइडिया होना चाहिए. ठीक है. दिल्ली में क्या क्या 3 4 चीजें चल रही है, उसके आसपास के प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भी उनका डेवलपमेंट चल रहा है, एनसीआर का एक्सपेंशन चल रहा है और दिल्ली में, और आपके जो अपना सेफ्टी प्रोग्राम है वो चल रहा है, उसको बताना चाहिए था. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे केरला में मैंने बोला कि केरला भी बहुत सारे न्यूज में था. अगर तुम न्यूज फॉलो करोगे तो केरला तो हर दिन केरला कुछ ना कुछ न्यूज में आ रहा है. ओके. जैसे केरला में क्या था कि लाइक इट वाज लाइक अ वेरी मेजर इवेंट लास्ट ईयर, कि वहाँ पे ईयर ऑफ इंटरप्राइज हुआ था केरला में, है ना. केरला में वाज द ईयर ऑफ इंटरप्राइज, दैट मीन जहाँ पे वो लोग एक साल में उनका एम था कि 1 लाख इंटरप्राइज ओपन करेंगे. ओके. एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है. तो उसके लिए वो लोग 1 लाख ओपन करते, उन्होंने बोला अचीवमेंट 8 मंथ में ही ले लिया. तो 8 मंथ में दे वर एबल टू ओपन सम 1 लाख इंटरप्राइजेस, ठीक है. उसमें अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट था केरला का, उसमें 10,000 कंपनीज ओपन हो गई, ठीक है. दैट वाज अगेन रिकॉर्ड नॉलेज. ये सब चीजें तुमको पता होना चाहिए, ठीक है. तो थोड़ा आउट ऑफ एमएसएमई सेक्टर क्या कर रहा है इंडिया में, एमएसएमई कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है. सो ऑल दोज स्टफ्स अगर तुम थोड़ा ध्यान रखोगे अबाउट द करंट न्यूज, स्टेट कैसे कर रहे हैं इंडिया के. ओके. सो ऑल द स्टेट में से उड़ीसा में भी ग्लोबल समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट हुआ, यूपी में होने वाला है, हाँ, एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ. तो ये सब क्या क्या, तो एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए. तो तुम जैसे तो मैं बोल रहा था कि इंडिया का, मैं समझा कि इंडिया कैसे फाइनेंशियली इंप्रूव कर रहा है, तो आपको ये वाला पॉइंट बोलना चाहिए था कि इंडिया भी हर एक सिटी में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं. उड़ीसा में हुआ, एमपी में हुआ, यूपी में होने वाला है, ठीक है. सिटी बाई सिटी सिटी, ये लोग हर एक, अब क्या करें लोग, माइक्रो लेवल पे सब क्या होता है ना, कि जैसे इंडिया में टारगेट कर रहे हैं, ठीक है. तो अब सिर्फ इंडिया में नहीं, बोल दिया इंडिया में एफडीआई चाहिए. कहाँ, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, कहाँ एफडीआई चाहिए. अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि शॉर्टर स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं. ओके. टारगेटिंग लाइक कि अब एमपी में करते हैं अलग से भी, भाई एमपी में इतना लैंड है, एमपी गवर्नमेंट लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उड़ीसा में इतना लैंड है, उड़ीसा में गवर्नमेंट लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूपी में है. तो अभी लोग एक माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं. सब पॉइंट आपको वहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए. ओके. just read about these things. Okay. And बाकी सही था. थोड़ा सा एक दो जगह फंबल कर रहे थे, तो दैट इज क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरव्यू दे रहे हो तो थोड़ा हो जाता है मॉक इंटरव्यू वगैरह. बट एक कल एग्जाम में उन चीज को ध्यान रखना कि फंबल नहीं करें, फ्लो में आंसर दे पूरा, ठीक है. एंड बाकी तो ठीक था. सो विश यू वेरी गुड, लाइक ऑल द बेस्ट. कल आई में अहमदाबाद है ना. यस सर. चलो. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बताओ कुछ तुमको सर पूछ. एक क्वेश्चन था. हाँ पूछो. सर सर, लाइक मैंने जब सीए फाइनल कर लिया तो उसके बाद मैंने 3 महीने के अराउंड एक यूट्यूब चैनल भी चलाया था. तो शुड आई मेंशन इट बिकॉज इट हैज लाइक 130 सब्सक्राइबर्स ओनली. कितना, 130? हाँ, 7,000 व्यूज एंड 130 सब्सक्राइबर्स. कोई रिलेवेंस लाइक होगा इसका. बट आई वाज थिंकिंग कि लाइक मैं उस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ. अगर ये मेरे से वीकनेस पूछते हैं, आई कैन से लाइक माय टू डेवलप माय कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह. मतलब स्ट्रेंथ में बोल सकता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह कभी ठीक नहीं, नहीं. कभी नहीं, वीकनेस में कुछ नहीं. वीकनेस बस क्वेश्चन टाल देना कुछ ना कुछ बोल के कि भाई कुछ था, हैबिट था, प्रोक्रेस्टिनेशन का एंड ऑल दैट, ठीक है, बट वो खत्म हो गया, अब नहीं है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है. वीकनेस को एकदम, जितना वीकनेस इंटरव्यू मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है, वो तो मिनिमाइज कर लो. स्ट्रेंथ ओके. को बढ़ा के बोलो, स्ट्रेंथ को 2 का 4 बोलो, ठीक है. बट वीकनेस जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज एज लाइक एज
लेस एज यू कैन. ओके, मे बी एक वीकनेस वो भी बोलो कि पहले था, बट अब वो भी खत्म कर दिया. कैट में प्रिपेयर किया तो वो हैबिट भी खत्म हो गया. कैट में काफी रिग्रेस, काफी लाइक अग्रेसिवली कैट को प्रिपेयर किया, काफी अच्छे से प्रिपेयर किया. आपको 98.6 आया भी था, है ना? तो बोलो इन चीज़ों को कैसे आपने क्या क्या प्रिपेयर कर किया. तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको वो हैबिट भी खत्म हो गया. थोड़ा सा ज़्यादा स्लीपिंग हैबिट था या प्रोक्रेस्टिनेशन था, वो भी बहुत कम हो गया. तो बस इंटरव्यू में ऐसे ही बोलना चाहिए, वीकनेस को कभी हाईलाइट नहीं करना चाहिए. ओके. ठीक है, और कुछ पूछना है बताओ. नो नो सर, थैंक यू. चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ठीक है, कल बताना कैसा हुआ यस. इंटरव्यू. हाँ सर, थैंक यू. बाय बाय. And also, guys, I teach live at an academy. So if you wish to study from me and from the other top educators in CAT category, you can subscribe to an academy. हम लोग डेली लाइव क्लासेस लेते हैं वहाँ पे. लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, लॉट ऑफ क्लासेस. उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं. लाइक इन LRDI हम लोग 500 सेट सॉल्व कर रहे हैं LRDI में. This year we are solving some 2000 plus questions in quant. All the exercises from basic to advanced level. तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो. बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है ये. 20% ऑफ है ऑन ऑल कैट सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माई रेफरल कोड रवि रोधा. ठीक है. एंड ऑल्सो उसके अलावा अभी 28 पर फैब से 10% का प्राइस हाइक है. नॉर्मल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट 2 साल में होता है. ओके. और अभी आपको इसके अलावा 6 मंथ का एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है. दैट इज अ हैट्रिक ऑफ बेनिफिट्स हियर. ओके. तो दैट मीन्स इन 12 मंथ, बाइंग 12 months it automatically gets increased by 3 months, and if you buy 18 months it automatically get increased by 6 months. तो यहाँ पे हैट्रिक ऑफ बेनिफिट्स है, 3 benefits in a row. Okay, so all 3 you can avail before 28 February. This is my referral code, you can use this. And सारा आपका जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है, enrollment link. Okay, thank you.